Hello and good evening, everyone. I guess we are live. Just let me check on. Yes. One second. Okay. So today, what we are going to discuss about is actually very important, and you know, these kind of problems are quite familiar and famous among interviews, as well as if you do competitive programming or even if you solve DSA. This is the topic that I mean everyone comes up to if you are not actually stuck on a race. Nothing personal, but yeah, today we have got dynamic programming as our topic. Okay, I hope I am audible. Just checking one. Yeah. So, what are we going to discuss today in dynamic programming? First of all, of course, the concepts, since it's the first class on dynamic programming. So, we will learn the concepts, the usage actually, the which are the types of questions that require us to put brains onto dynamic programming approach. Next, we'll have two questions today. The first is climbing stairs, and the second is very familiar to climbing stairs. That is actually cost of climbing stairs. Cost of climbing stairs. These two are the questions that we'll be discussing today. But first let's take a look at what actually this particular approach tells us to do, why we use it, and where do we use it. So, okay. Previously, we read about greedy algorithms, right? So greedy algo is what we did. We have heard about terms like optimal substructure. We have heard about terms like globally optimal solution, locally optimal solutions, right? And we also have read about recursion. ठीक है तो ये दोनों चीज अपने को थोड़ा थोड़ा पता है अभी इन दोनों का कॉन्सेप्ट से ही एक्चुअली मेजरली इसका कॉन्सेप्ट है मेजरली रिकर्शन के कॉन्सेप्ट है एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ से उठा करके कि ग्रिड एल्गो क्या था we will be creating a complete new approach that is known as dynamic programming or in short DP. Okay. Um, so yes, what DP tells us is as we had locally optimal solution here. So DP also tells us about something known as optimal substructure. Let's first write the terms down and then we'll explain one by one what it is. So Greedy also talked about sub problems, right? Sub problems and making all combining those sub problems to make a solution for a bigger problem. Even dynamic programming talks about sub problems. Now recursion talked about backtracking, and this is what we'll get into dynamic programming from recursion, and that is backtracking. Okay. So these are few, terminologies. Why optimal substructure? Because even dynamic programming breaks the problem into subproblem and not only breaks but solves them also. So your globally optimal approach will be also a locally optimal approach. Okay. That is what is the first uh, property you can say. Now subproblems, okay, we used it here. And now backtracking, okay. Now how dynamic programming uses backtracking, we will see that all by using this particular example in this question as this question. So let's just copy it and paste there and see what it tells us. And why not just recursion and why
dynamic programming. We'll see that. So पहले तो इस क्वेश्चन का एक बेसिस जनरेट करते हैं and then we will learn कि why and how should we use dynamic programming. ठीक है. So in this question we are asked that you are climbing a staircase. It takes n steps to reach the top. Okay. Each time you can either climb one or two steps. In how many distinct ways can you climb to the top? Okay. So you can consider that we have something like this staircases. Okay. This is the zeroth, this is the first step, second, third, and so on up to some n steps. Okay. What we are told that we can only climb one or two. And what do we have to return? We need to return how many distinct ways can we climb to the top. So how do we get to this particular problem? How do we approach this? See, the best way to do it, according to me, is to start with a single point. ठीक है, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिर्फ उस पॉइंट पे कंसिडर करके चेक करो कि अगर इफ यू आर एट जीरोथ इंडेक्स और रादर जीरोथ स्टेप, तो जीरोथ स्टेप से जीरोथ मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम जीरोथ स्टेप. ओके, दैट इज ऑब्वियस. ओके, दिस इज द स्टार्ट. नाउ since you are starting from zeroth position, how many steps will it take to reach the zeroth step? So that will be zero. ठीक है. अभी अगर हमको फर्स्ट स्टेयर केस पे पहुंचना है, दिस इज आवर डेस्टिनेशन, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ स्टेप्स दैट वी विल बी टेकिंग? कौन है बताओ, आवाज दूर से आ रही है. वन सेकंड, वन सेकंड. I hope now you will get a clear voice. Okay. So see, we are what we are doing is building a uh, you can say an equation to get the answer to this particular problem. So if one was uh, the final step that we had to reach, so what was the options? What were the options? अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे पहुंचना है, we can take only one or two steps. So there is only one option, that is to jump from here to here, right? So we have one option. Now, if two was the destination, so what are the options that we could have took? That one plus one, or you it's one plus one, or you can directly jump to position two. So there are in total two options, right? ये सारा number of ways है, ठीक है. अगर थ्री पे पहुंचना हो तो क्या करेंगे? अभी थ्री पे पहुंचने के लिए एक तो तुम मतलब ऐसे ब्रूट फोर्स तरीके से सोच सकते हो कि वन प्लस वन दैट इज वन ऑप्शन, or you can jump to one and then take like choose that you will jump two steps and reach three, or you can choose to jump two at first and then jump one. Okay, ये options है. और कुछ option है? नहीं है तो. Now if you carefully look, okay, then how many ways we have three ways. Similarly for four what we'll have, तुम फोर पे कैसे पहुंचोगे? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है. अगर तुम थोड़ा सोचोगे कि हम to reach 4, I'll have to take only either one step jump. If you take one step jump, then you will be jumping from 3 to 4, or you'll have to take two step jumps. अभी two step jump के लिए तुम पहले 2 पे तो पहुंचोगे, तब तो तुम यहाँ से two step jump लोगे, right? So there are only two possible ways, or rather two possible ways to reach 4, but via 3 or 2, right? So what we can do here is we can directly like check ki how do we reach 2? It is 1 plus 1 or 2. And if we reach 2, we have only one way to reach 4, and that is to add 2 to both. Okay. How many ways these contribute in order to reach 4? It still contributes two ways. Okay. Now if you are at 3, okay, if you are at 3, so these are the possible ways to reach 3, right? So in how many ways can you reach 4? You just have to add 1 to all of it. But overall what you are making is 3 steps only. So if you are getting my point, to reach the nth step, what we need to do is we need to check if A is kind of a function, what is the number of steps you require to reach n minus 2 steps, plus what is the number of steps ways to reach n minus 1 step in order to reach
4. Okay, you'll have to see कि तुम 3 कितने तरीके से पहुंच सकते हो, and just add 1, that will again make 3 as possible number of ways, right? और 2 कितने तरीके से पहुंच सकते हो, just add 2. So this is what we are coming up with. ठीक है, fine. अभी ये हमें जो मिला है, these kind of equations is known as recursive equations, right? Because you are depending on something that has happened in the past, ठीक है? Or if you had to check this, you'll have to compute this first and then this first in order to compute this, right? So this is what is called as a recursive relation. And in dynamic programming, these are, you can say, the approaches. First, what we did is broke our problem to subproblems. ठीक है? Broke our problems to subproblems, and if possible, go and start with the first possibility. ठीक है? उसके बाद तुम second check करो, third check करो, try to get a pattern, and then you make a recursive solution. Once we are done with these things, now we come up to learning on why we are using dynamic programming. Okay. अभी recursion का हमें step तो पता चल गया था, so why not just put recursion and get our answer? You can just do this and get how many number of ways are possible to reach nth step, right? But why to use dynamic programming and why not the recursion approach? Because suppose you have to calculate uh, the number of possible ways to get up to one first step. So that is a of 1. Okay. Now you need to calculate a of 2, which is what? A of 0 plus a of 1. Okay. So once you calculated this, in order to calculate this, you will calculate a of 0, which of course you knew already, and then you will again calculate a of 1 to get a of 2. Okay. Now once you have a of 2, if you are again putting it on recursion and you are calculating a of 3, then this will prompt you to calculate a of 2 and a of 1, and this will further increase the depth and will go on to calculating a of 1 and a of 0. ठीक है, अभी तुम एक और देखते हैं a of 4 के लिए. A of 4 के लिए you will have to calculate a of 2 and a of 3. A of 2 के लिए you will have to calculate a of 1, a of 0. A of 3 के लिए you will have to calculate a of 2, a of 1. फिर इसके लिए a of 0 और a of 1. ठीक है, अगर तुम्हारा बेस कंडीशन तुम सेटअप कर देते हो कि 0 और 1 के लिए तुम ये रिटर्न करो, क्योंकि तुम अगर यहाँ पे देखो कि 0 के लिए 0 लग रहा है, 1 के लिए 1 लग रहा है, कुछ एक बेस कंडीशन अगर सेट कर देते हो रिकर्शन में, even then you see, if you are calculating a of 3, you are calculating a of 2, you are calculating a of 1, a of 0, and so on. In order to calculate a of 4, you are again calculating a of 2, you are again calculating a of 3, again a of 2. So you are repeating what you have already done. This increases the computation, right? Once I have calculated something, why will I calculate it again and again? Yes, exactly, the code guy. Yes, those are the number of ways, right? So once I have calculated this one, so why will I calculate it again, right? What we can do is we can store it. Okay. Once you calculate it, you store it, and then you check whether or not it is in our storage. मतलब समझ रहे हो, a of 2 अगर कैलकुलेट कर लिए तो हम उसको एक किसी भी फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, और जब भी वापस से रिक्वायरमेंट पड़ेगा, we'll just check whether or not we have this in this storage that we created, right? Now there are two methods to put this storage. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डीपी का ये फायदा हुआ कि हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो वी आर सेविंग कैलकुलेशंस और सेविंग computations rather, saving computations, and hence we are saving time complexities, because this can result into multiple calculations, right? Oh, okay. Now this is applicable, you can apply DP if you have overlapping subproblems. What do I mean by overlapping subproblems? Overlapping subproblem is when you have codependency, okay, that the solution is not independent of each other.
What do I mean is, to get A of 4, you need to get A of 2, A of 3. To get A of 3, you need to get A2, A1, right? So it is overlapping. In the next few problems, if not today, then maybe in the next session, you will see that there are kind of problems where if you select in an array, if you select this position, then it will tell you कि तुम एक बार ये select कर लिए तो ये दोनों select नहीं कर सकते. And this will create a overlapping subproblem. Why? Because if in the next iteration you select this, then you will not be able to select these. मतलब समझ रहे हो? This is overlapping, right? ये वाला particular portion overlap कर रहा है, देखो. तुम या तो इसको सेलेक्ट करोगे तो इसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर इसको सेलेक्ट करोगे तो इसको सेलेक्ट नहीं कर पाओगे. ओवरलैप कर रहा है ना. These kind of problems you will be putting the approach of dynamic programming, and this is very helpful. Okay, so these two are the prior reasons why we use dynamic programming: saving competitions and overlapping. Now coming up to the point that we have to store. Fine, very good, we have to store it, but how? So there are two methods to do so. The first method is called memoization, okay, and the second method is called tabulation. ठीक है, दो मेथड है, memoization और tabulation. Tabulation को you will also see written as bottom up. Why? I'll tell you. And memoization you will see as top down approach. Hmm? Now what is the difference? And in some questions you will get to see that even without doing these things, you can save spaces and use variables. ये सारा question में applicable नहीं होगा, but some. In our case, in this particular question, that will be applicable, so I'm writing it here. So you can say that these three are the approaches. Now what memoization does is, this uses pure recursion. ठीक है, ये तुम recursively functions call कर रहे होते हो, but what you do is, there are just few basic things that we add up in recursion to check whether or not the things have been calculated before. First of all, you add say a vector, and let's name it dp. ठीक है, and generally you give a size. ठीक है, which is not important right now. अभी इस dp में, whenever I am calculating something, you are storing it in this particular thing. So dp of n in our problem will be, dp of n will be the dp of n minus 2 plus dp of n minus 1. ठीक है, ऐसे तुम dp of n में स्टोर कर रहे होते हो. And the next thing, whenever you are calling this recursion, you will check. ठीक है, you are checking that if dpn exists. अभी कैसे चेक करोगे dpn exists or not? One thing you can do is initialize everything with -1, and you need to check here that if dp of that particular index is not equals to -1. That means we have already calculated, right? Already calculated. And so you are directly returning. So you return dp of I. बस इतना स्टेप करना है मेमोराइजेशन के लिए. तुम एक डीपी करके एक वेक्टर या एरे इनिशियलाइज करोगे, उसमें इनपुट्स वो सॉरी उस पर्टिकुलर इंडेक्स में सारा आंसर्स को पुट करोगे, एंड वंस यू आर डन विद दैट, व्हाट यू डू इज जस्ट चेक कि हम लोग -1 से इनिशियलाइज किए थे, अगर -1 नहीं है मतलब कि उसको चेंज किया गया है, और चेंज किया गया मतलब वैल्यू वहाँ कैलकुलेटेड है ऑलरेडी. फाइन. अभी टैबुलेशन अप्रोच में क्या करते हैं? In tabulation approach, you are actually creating a kind of a table. Okay. In our case, it can be an array, a vector, or a 2D table, anything. इसमें तुम जैसे recursion में क्या देते हो? Recursion में you need base conditions, right? You have to give base conditions. ये same base conditions यहाँ पे तुमको क्या बोले प्री इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि ये वाला ये 0th इंडेक्स पे x होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे y होगा. ठीक है, अब ये प्री इनिशियलाइज है, मतलब कि जब भी तुम यहाँ से a ऑफ द सेकंड इंडेक्स से you access this particular thing dp of n minus 2, then you will not
लाइक एनकाउंटर एन एरर, ठीक है, गार्बेज वैल्यू नहीं आएगा यहाँ से। बट अगर यहाँ से तुम a-2 जाओगे तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। तो तुमको एटलीस्ट पहला दो तो इनिशियलाइज करके रखना पड़ेगा। समझ रहे हो? जितना पीछे हमें जाना है, तुम वो चेक तो करोगे कि जीरोथ इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे वो वैलिड है कि नहीं। अगर हम लोग जीरोथ इंडेक्स से तुम यू कॉल n-2, that means you are accessing something like dp of -2 that doesn't exist there. So you'll have to pre-initialize these two in order to like uh, sequentially iterate after that, right? अभी तो तुम नॉर्मली कर सकते हो 2 से 3 से, उसके पहले का जितना रिक्वायरमेंट्स है सब सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे यू पुट x प्लस वाई। अभी जब तुम इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स पे रहोगे, सो यूल पुट y प्लस एक्स प्लस वाई, सो एक्स प्लस 2y एंड सो ऑन। तुम पूरा ये मतलब फिल अप कर रहे होगे, राइट? सो दिस इज अ टैबुलेशन अप्रोच। अभी वेरिएबल्स अप्रोच हम लोग क्वेश्चन में करते करते देख लेंगे कि इन दोनों में स्पेस लग रहा है। हम लोग वेरिएबल्स अप्रोच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं लगेगा ज्यादा, ठीक है। यू आर ओनली डूइंग थिंग्स विथ सम वेरिएबल्स, सो यू हैव वन ऑर्डर ऑफ वन, दैट इज कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। बट यहाँ पे तुम देखोगे रिकर्शन में ऑफकोर्स वो कॉल स्टैक यूज करता है, तो वहां पे तुम्हारा स्पेस लगेगा। और टैबुलेशन में भी वो सिंस एरे यूज करेगा तो तुम्हारा स्पेस लगेगा ऑर्डर ऑफ एन का, ठीक है। तो दीज आर द थ्री वेज इन विच यू कैन स्टोर एलिमेंट्स। नाउ लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम लोग तीनों से करेंगे, टैबुलेशन, मेमोइजेशन और उससे तीनों से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक ऑन टैबुलेशन। So as I have told you that if things are lower than what you are told that in how many okay, so you initialize the base conditions, right? If n is less than, यहाँ से आंसर ये वाला पोर्शन लगेगा अपने को। यू कैन सी, यू कैन टेल कि n जब 1 2 0 1 2 3 हो, तब तो हम लोग डायरेक्टली यू नो द आंसर इज 0 1 2 3, राइट? सो यू कैन डायरेक्टली टेल कि अगर ऐसा कुछ है लेस देन इक्वल्स टू 3। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्या करोगे, एक वेक्टर बनाओगे डीपी का, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग अ वेक्टर इंटीजर, नेमिंग इट डीपी। अभी देखो साइज बता कि कहाँ से कहाँ तक रहेगा। इन ऑर्डर टू गेट द आंसर फॉर nth जो लास्ट है, तुमको वो डीपी का साइज कितना चाहिए होगा, लाइक तुम डीपी में क्या स्टोर कर रहे हो, जो आंसर है, राइट? मतलब कि इन आवर क्वेश्चन व्हाट वी आर स्टोरिंग इज इन द पर्टिकुलर एरे, जो हमारा डीपी एरे है 0 1 2 अप टू n। इस पर्टिकुलर एरे में और वेक्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर स्टोर कर रहे हैं ना, कि 0th पे 0 लगेगा, फर्स्ट पे 1 लगेगा, 2 पे 2 लगेगा, और कितने पे कितना स्टेप्स जाने में कितना नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है, वो स्टोर कर रहा है। तो इसका साइज ऑफ कोर्स नम्स डॉट साइज तक होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई टोल्ड यू इज टू इनिशियलाइज, ठीक है, प्री इनिशियलाइज एटलीस्ट टू वैल्यूज, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो बन रहा है दैट इज दिस, you need to get to a particular equation, recursive equation, right? ये वाला तो n-2 है, so 2 तक हम लोग initialize करेंगे, so dp of 0 is set to 0 and dp of 1 is set to 1, and then you can write for int I is equals to 2, I is less than num size I plus plus dp at I will be equals to what? If you can write in the comment n-2 plus dp at n-1, okay. And then you simply return dp at num size -1. I guess this is right. देखो this works. ये क्या है? um, okay, wait. Given n,
So directly write it. Does it start from 0th index? Right. So n plus 1 तक लेते हैं. और ये nums और size नहीं होगा भाई, nums तो है ही नहीं. This will be good. Okay, I guess this will work. अरे यार क्या हो रहा है? N is less than 3, return n. Vector, you create a vector dp, you initialize two values, and then I is equals to 2 up to n, you are writing I is equals to 2. So n is equals to 3, output is 2, output is 3. How did it? 2 is equals to I minus 0 plus 1, 1. ओके 2 पे भी इनिशियलाइज करना. 2 is equals to 2. इसके बाद यहाँ से यूज होगा 3 से. मतलब 2 पे वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, तो -1 वाला 1 आ जाएगा आंसर यहाँ पे. यहाँ से 3 से वो चीज़ है कि 1 plus 2 and then you go on further, right? Guess this will work. Let's see. Fine. तो ये वाला कौन सा अप्रोच है? दिस इज टैबुलेशन. इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, ऑफ कोर्स. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज आल्सो ऑर्डर ऑफ n. ठीक है, लेट्स सी वो मेमोइजेशन वाला अप्रोच कि वो कैसे करेंगे. तो उसके लिए क्या बोला कि रिकर्सिवली फंक्शन कॉल करना होगा और अपने को एक वो रखना होगा ना, वेक्टर. ठीक है, जो वेक्टर अपने को पास करना है उसके साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ वेक्टर integer, of course. You can name it anything, dp. अभी 0th इंडेक्स से चालू हो रहा है, तो nth पोजीशन के लिए you will have to have n plus 1. ठीक है. And what did I say? You have to initialize with -1. ठीक है, you are initializing every with -1, every element actually with. अभी वो वेक्टर बन गया. अभी क्या कर सकते हैं? रिटर्न एक पर्टिकुलर एक और फंक्शन बना लेंगे सॉल्वर बोल के, और इसमें n रिटर्न करो, मतलब n भेजो और send that particular dp. ठीक है. Now inside the solver that will of course return int, क्योंकि वो आगे जाके ये particular int जो यहाँ से आएगा वो ये रिटर्न पे चला जाएगा इस वाले पे. ठीक है, और यही सीधा यहाँ पे रिटर्न होके ये इंटीजर जो है वो आंसर बनेगा हमारा. int n comma and dp. ठीक है, उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा बिकॉज यू विल बी चेंजिंग थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस अगर ना ले तो वो अपना अपना कॉपी बनाएगा हर बार को, मतलब शैलो कॉपी बना के डिलीट करेगा. सो यहाँ पे रेफरेंस लेना पड़ेगा अपने को. ठीक है. Once we have this, since it's a recursion, so we need to set up base conditions. If n is less than equals less than 3, to simply return n. ठीक है, or else you are checking if dp of n is not equals to -1, so you are returning dp of n. ठीक है, ये दोनों चीज करने के बाद तुम क्या करोगे कि you will be like dp of n will be equals to
तुम वापस से सॉल्वर कॉल करोगे राइट, विद n-2 का जो आंसर था एंड वो एरे प्लस सॉल्वर n-1 के लिए जो आंसर था and that particular array. And since you need a return statement at the end of this, so you just return dp of n. Right? So तुम 3 के बाद सबके लिए like 4 के लिए क्या कैलकुलेट कर रहे होगे, you'll be like calculating for solver of n-2, that is 2, 4 minus 2 is 2, and for 3, and then you'll return dp of n, that is जो सबसे हाईएस्ट स्टेप है जो हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक है। और इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पे जाएगा और ये आंसर इसको वापस भेज देगा। I guess that's fine. Let's check. Looks fine though. Yes, it will work. Cool, works. So this is the memoization approach कि recursively functions call करके if you carefully see यहाँ पे भी हमारा time complexity जो है वो order of n ही है, ठीक है। और यहाँ हमारा space complexity भी order of n होगा। Why? Because recursion, and of course that will take space instead. Fine. Now there is one more option to do this particular question. How? See, हमारा आंसर क्या आ रहा है अगर तुम देखोगे 0 1 2 3 and then you are adding 5 and then 8 and so on, right? The next will be 8 plus 5, that is 13 and so on. Okay. Now, if you see, that if after this these particular question these particular positions, if I keep my x at 1, y at 2, ठीक है, and my current at 3, so you are writing कि current is equals to x plus y, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये तो करंट हम लोग कैलकुलेट कर दिए, बट नेक्स्ट टाइम जब करंट यहाँ पे होगा तो उसके लिए x यहाँ पे होना चाहिए, y यहाँ पे होना चाहिए। So now x will become what? X will become y. So you're writing x equals to y. And what y will become? Y is actually becoming current. And you're writing y is equals to current. ठीक है। इस पर्टिकुलर अप्रोच से यू आर जस्ट यूजिंग 3 वेरिएबल्स एंड देन क्रिएटिंग द सॉल्यूशन, राइट। तुम पहले x और y इंस्टेंशिएट कर लोगे, अगर ये तो बेस कंडीशन है कि इतना रहा तो ऐसे, और नहीं तो x को तुम 1 बनाओगे, y को 2 बनाओगे, और फिर आगे के लिए वो कैरी ऑन कर दोगे, राइट। सो यू कैन डू दिस आल्सो। लेट्स सी हाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे काम नहीं करेगा चीजें उसको भेज दो कि लाइक इफ n is less than 3 जस्ट रिटर्न it, और नहीं तो यू हैव int x is equals to 1 comma y is equals to 2, ठीक। जैसे यहाँ पे बोला अभी फॉर कहाँ से, फॉर int I is equals to, कहाँ पे हो तुम 3 पे हो तो, राइट, और I कहाँ तक जाएगा, I is less than equal to n I plus plus, what are the things that we have to do, current is equals to x plus y, now my x is equals to y and y is equals to, ठीक है। अब यहाँ पे तो तुम y रिटर्न करो चाहे करंट रिटर्न करो, दैट्स सेम थिंग, दिस शुड वर्क। हाँ करंट इन डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे हमारा स्पेस बच रहा है, 3 वेरिएबल ऑर्डर ऑफ 1 के स्पेस से नहीं, कांस्टेंट स्पेस से चीजें सेट हो रही है और ये वेरिएबल फॉर्म में आ रही है, right? Of course this will be the best solution क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है, बट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बचे, तो
time complexity is order of n, space complexity is order of 1. Now one more thing that I want to say you here is, जो भी sequence हमने पढ़ा कि a of n is equals to a of n minus 2 plus a of n minus 1, this is kind of a Fibonacci sequence. अगर तुमको Fibonacci का पता हो, what Fibonacci was 0 1 then 1 and then 2 3 and then you add on the last two indexes 5 8 13 and so on. Okay, बस ये one extra है यहाँ पे. So this sequence is known as Fibonacci sequence. ठीक है. जिस तरह से हमने क्लाइंबिंग स्टेज सॉल्व किया, द सेम वे यू कैन सॉल्व फिबोनाची नंबर्स आल्सो. रिकर्सिवली भी कर सकते हो तुम, मेमोइजेशन से, टैबुलेशन से, या वेरिएबल तीनों से कर सकते हो. यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल. ठीक है. अभी इसका एक और अप्रोच होता है which I won't be going into that approach, but I am just telling you if you are curious and if you want to learn about this, and that is known as matrix multiplication or matrix exponentiation approach. Okay, exponentiation. ठीक है. इसमें क्या करते हैं, इफ यू नो अबाउट क्या बोलते हैं उसको, we call it transmission और ट्रांजिशन मैट्रिक्स. ठीक है. अगर इसके बारे में पता हो, और नहीं तो अगर तुम लोगों ने स्टैट्स पढ़ा है थर्ड ईयर में या जहाँ पे भी, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के को, एक पर्टिकुलर स्टेट को, इफ यू रेज इट टू द पावर आर और समथिंग, देन दैट विल टेल यू कि तुम आर स्टेप्स बाद कैसे, क्या स्टैट्स होगा, क्या प्रोबेबिलिटीज होगा. इस सिमिलर वे में यहाँ पे भी देर इज अ मैट्रिक्स विच कैन डिफाइन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. जो हमारा इक्वेशन था ना, ये वाला, ये इसको कैसे, यू सी, if you have 1 1 1 and 0, and if you have the next step, that is a of n and a of n minus 1. ठीक है. अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो you will get to know, if I am right, इसको ऐसे करो, n minus 1 n minus 2. ठीक है. तो this is actually the linear equation of this form. ठीक है. a of n minus 1 plus a of n minus 2, क्या होगा यहाँ पे देखो, a of n minus 1 plus a of n minus 2. ठीक है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली, एंड a of n minus 1. मतलब ये क्या है, इफ यू रेज इट टू द पावर 1, तुम इस स्टेट पे पहुंच रहे हो एफ एन माइनस वन से, ए ऑफ एन माइनस वन प्लस ए ऑफ एन माइनस टू, विच इज नथिंग बट ए ऑफ एन फ्रॉम ए ऑफ एन माइनस वन. दिस इज व्हाट वी रिक्वायर इन अ सिंगल स्टेप. एंड इफ यू रेज दिस, do we have space, am I writing it here, if you raise this particular matrix to power of n, then you will have solution of this particular example. ठीक है. मतलब कि क्या ये बोलेगा कि तुम n स्टेप्स के बाद, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर पोजीशन पे जो आंसर होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट डिक्लेयर लाइक डिसाइड्स तुम्हारा ए ऑफ nth पोजीशन. ठीक है. यहाँ पे जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, एंड यू कैन डू इट इन ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम. अगर तुम एक्सपोनेंशिएशन के बारे में पढ़ोगे, इफ यू नो अबाउट बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन और मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, यू विल गेट टू नो कि वो लॉग एन टाइम में पॉसिबल होती है. एन है, ये लॉग एन है, ऑफ कोर्स दिस इज बेटर, बट ये हाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा समझने वाला बात है. ये वाला फंक्शन तो ठीक है, ये तुम समझ जाओगे if you read about this in statistics, or if you know what transition metrics are, then you know कि ठीक है, if you raise it to power f n, this tells you the state कि तुम nth step बाद कैसे दिखोगे. ठीक है. And this will be the answer. So you just have to return the matrix of 0 comma 0, or rather 0 0, to get the answer. ठीक है. आप पढ़ा रहे हो या सीख रहे हो, दोनों भाई. Actually this course has like is helping me to learn a lot. So yes, I'm learning as well as teaching. Fine. So if you like return this particular thing, then you will be getting the answer. You just need to check about matrix exponentiation and binary exponentiation. Okay. Moving on to our next question, and that is climbing stage, minimum cost climbing stage. Okay.
हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि you are given an array cost where cost of I, let's make it in our own way, ठीक है, cost है, index I जो है वो ith step on the staircase का cost बताता है, ठीक है. Once you pay the cost you can either climb one or two steps, okay. So in order to reach these two steps I'll have to pay this first, ठीक है, okay. you know I do this for understanding things, खुद से करने का, ठीक है. Or rather if you want to think in this way, so this is 0 1 2 up to n. In order to reach this step you'll either have to pay this and directly jump here, or you'll have to pay this and jump here, okay. इन दोनों में से कुछ कर सकते हो to reach at this particular index. So you can either start from, okay, you can either start from the step with index 0. Okay, you can either start from this position or you can start from this position or with index 1. Return the minimum cost to reach the top floor, ठीक है. यहाँ तक पहुंचने में क्या मिनिमम कॉस्ट होगा. तो अगेन हमारा जो अप्रोच है वो एकदम उसी पे हम लोग चलेंगे, ठीक है. पहले तो एकदम बेसिक पे ब्रेक डाउन कर दे कि 0th स्टेप पे रहेंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा. 0. फर्स्ट स्टेप पे लगेंगे तो मिनिमम कॉस्ट क्या लगेगा, सोचो. 0, राइट. हमें मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करना है, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप पे भी हमारा कॉस्ट जो लगेगा वो 0 ही है. और उसके बाद सेकेंड स्टेप पे वी हैव टू ऑप्शंस. आइदर यू पे 0 एंड जंप टू सेकेंड, और यू पे 0, यू पे 1 एंड देन कम टू सेकेंड, ठीक है. तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है हमारे पास, राइट. थर्ड पे क्या होगा, तुम देखो थर्ड पे क्या होगा. यू कैन, तुम थर्ड पे जा कैसे सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम 1 से जा सकते हो 2 स्टेप कूद करके, और तुम arrows ऐसे 1 से 2 स्टेप्स यू रीच थर्ड एंड 2 से 1 स्टेप यू रीच थर्ड, राइट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम 1 से थर्ड पे जंप करना चाहते हो तो तुमको 1 तक पहुंचने में जो पैसा लग रहा है उतना तो लगेगा, प्लस जो भी कॉस्ट एट 1 है, ठीक है, एट 1, एट द फर्स्ट स्टेप, वो पे करना पड़ेगा, तब तुम जाके 3 पे पहुंच पाओगे. और अगर तुमको 2 से जाना है तो जितना कॉस्ट तुमको 2 तक लग चुका, ठीक है, उसके बाद यू नीड टू पे द प्राइस एट द सेकेंड position to reach the third position, if you're getting it right. So in this particular thing you can write 1 plus cost of 1 और 2 plus cost of 2. हमारे पास ऑप्शन यही है, बट हमें क्या करना है, इन दोनों में से मिनिमम चुनना है, ठीक है. एंड सिमिलरली फॉर 4, हम लोग 4 पहुंच कहाँ से सकते हैं, 2 से या 3 से. तो तुम 2 तक पहुंचने में जितना पैसा खर्च करो और 2 पे जो पैसा लगेगा वो खर्च करो, तब तुम 4 पे पहुंच पाओगे. नहीं तो 3 तक पहुंचने में जितना पैसा खर्च करो और 3 तक पहुंच, 3 के बाद जो भी 3 पे है पैसा वो खर्च करो. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 10 15 और 20 है, एंड यू नीड टू रीच दिस पोजीशन. तुम्हें एक्चुअली उसके बाद का पहुंचना है, ठीक है. तुम 20 पे करोगे तब तुम वहां टॉप पे रहोगे, 20 पे करके टॉप पे शायद, विल सी दैट, ओके. तो क्या कर सकते हो यहाँ पे 20 रीच करने के लिए, दिस इज द 0th इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट इंडेक्स एंड दिस इज द सेकंड इंडेक्स. सो यू आइदर स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड यू पे 10 टू जंप टू 20, ठीक है. अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो आई विल पे 10 एंड विल जंप टू 20 सेकेंड वाले पे, और 20 पे करेंगे एंड देन विल जंप टू द टॉप वाला पार्ट, ठीक है. तो हमने टोटल पे कितना पे किया, 30. और नहीं तो हम फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और 15 पे करते हैं, ठीक है. 15 पे किया और 2 जंप लिया, मतलब 20 के आगे वाला, एंड यू रीच टू द टॉप, ठीक है. यहाँ पे एक्चुअली टॉप है, इसमें यहाँ पे टॉप है, ठीक है. तो यही दो ऑप्शन है, एंड ऑफकोर्स 15 पे करना मतलब हम लोग कम पे कर रहे हैं, ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये चीज टफ हो जाएगा. यू कांट डू कि तुम ऐसे अपने इंट्यूशन से सोच लिए कि जो इन दोनों में से कम रहेगा हमेशा उसको चुन करके आगे बढ़ेंगे. देखो यहाँ पे जब 100 वाला बात आएगा, 100 और 1 पे, तो तुम हमेशा 1 1 1 1 चुनते रहोगे, 1 1 पे भी 1 चुनोगे, ऐसे करके नहीं बनेगा, ठीक है. जब चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, जब मोर नंबर ऑफ स्टेयर्स रहेंगे, तो वैसे तुम नहीं कर पाओगे, तुमको डीपी ही करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर अप्रोच.
अगर तुम ये दोनों को लास्ट गौर किए हो, थर्ड और फोर्थ वाले को, तो व्हाट डू यू गेट टू नो, इवन इवन इन सेकंड आल्सो, कि तुमको जीरो और वन पे पैसा नहीं लगेगा। मतलब कि हमारा जो बेस कंडीशन है, दैट मेक्स कि जीरो वाले पे जीरो हो, वन वाले पे जीरो हो, बट टू ऑनवर्ड्स क्या हो, दैट शुड बी, अगर ये हम लोग डीपी करके एक एरे में स्टोर करते हैं, ठीक है, डीपी एरे में स्टोर करते हैं, तो यहाँ जीरो स्टोर किया, यहाँ जीरो स्टोर किया, आगे क्या स्टोर करेंगे, दैट विल बी डीपी ऑफ आई विल बी इक्वल्स टू व्हाट विल बी, व्हाट इट विल बी, जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है वन और टू के लिए। मतलब कि क्या, जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है डीपी ऑफ आई माइनस वन के लिए और डीपी ऑफ आई माइनस टू के लिए, उसमें कॉस्ट ऑफ आई माइनस वन ऑफकोर्स, तब तो हम ith स्टेप पे पहुंच पाएंगे, प्लस कॉस्ट ऑफ आई माइनस टू, अभी इनका मिनिमम, एंड हेंस वी हैव क्रिएटेड आवर रिकर्सिव फॉर्मूला। ये है हमारा फॉर्मूला, वो रहा तुम्हारा पहला स्टेप, ये रहा दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप इज नथिंग बट यू आर स्टोरिंग। अब इसमें तुम कुछ भी चुन सकते हो, यू आइदर यूज मेमोइजेशन और यू यूज टैब्यूलेशन, एनीथिंग, in this case also you can use variables, ठीक। let's see how। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले टैबुलेशन वाले अप्रोच पे जाते हैं। तो पहले तो तुम एक एन ले लो जहाँ पे कॉस्ट ऑफ साइज साइज स्टोर कर लो, कॉस्ट ऑफ साइज, ठीक है, ये हो गया। अभी तुम एक वेक्टर बनाओगे डीपी का, ठीक है, साइज क्या रहेगा, एन के बराबर या उससे ज्यादा, सोच, एन से, अभी देखते हैं, रुको, बाकी का देख लेते हैं, पहले तो डीपी का जीरो वाला इनिशियलाइज करो जीरो पे, वन वाला इनिशियलाइज करो जीरो पे, ये हमारा बेस कंडीशन सेटिस्फाइड, और बाकी का तुम नॉर्मली लिख दो, for int I is equals to 2, I is less than equals to n, plus plus dp of I is equals to, जो फॉर्मूला बना के निकला, dp of I minus 2 plus cost at I minus 2, comma dp at I minus 1 plus cost at I minus 1। यही होगा, ये हमारे रिकर्सिव फॉर्मूला है और वो हमारा स्टोरेज है टैबुलेशन फॉर्मेट में। अभी रिटर्न क्या करना है, सोचो, रिटर्न डीपी ऑफ एन करेंगे तो दैट वुड मीन कि यू आर नॉट पेइंग फॉर एन, यहाँ पे भी अपने को n करेंगे तो दैट वुड मीन कि तुम n को n का पे नहीं कर रहे, बट इन ऑर्डर टू रीच टॉप यू विल आल्सो हैव टू पे फॉर n, तो यहाँ पे लेस देन n प्लस वन, लेस देन इक्वल्स टू n प्लस वन कर दो, ठीक है, मतलब कि तुम n प्लस वन के लिए कैलकुलेट करो, ठीक है, तुम n को पे कर रहे हो तब तुम आगे पहुंच रहे हो, ये वाला पार्ट हम कहना चाह रहे हैं, दिस वन दैट इन ऑर्डर टू रीच द टॉप यू विल हैव टू पे द लास्ट लास्ट जो कॉस्ट है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर n प्लस वन। सो इफ दिस इज n प्लस वन, यहाँ पे क्या साइज रहना चाहिए, दिस कैन ऑल्सो बी n प्लस वन, हाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, दिस बी n प्लस टू, और यहाँ पे तुम रिटर्न कर दो dp ऑफ n प्लस वन, मतलब कि n प्लस वन स्टेप पे पहुंचने में कितना लग रहा है, एकदम इजी लैंग्वेज में, ठीक है, वही ट्राई करते हैं इसको, वर्क्स, so this is what we got in our tabulation approach। ये काफी सिंपल है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जो टफ पार्ट है वो यही है कि तुम ये वाला पर्टिकुलर इक्वेशन तक आओ, एक बार ही तुम आ गए फिर तुमको टैबुलेशन मेमोराइजेशन में दिमाग नहीं खपाना होगा, ठीक है, व्हाई इज दिस,
stopwatch active. Let's see वो memoization वाला part. Reset it. So in memoization, you see if our it will be very similar to this particular thing. हम लोग का memoization stored है क्या? नहीं है. If you can try on yourself. ठीक है, इसका memoization खुद से करो. क्या करना, पहले तो बेस कंडीशन ले लेना कि कॉस्ट अगर कॉस्ट डॉट साइज जो है वो अगर 2 से कम हो और अदर इक्वल टू 2 हो तो तुम सिंपली जीरो रिटर्न करोगे. ठीक है, मतलब तुम जीरो और फर्स्ट इंडेक्स का बात कर रहे हो तो तुम रिटर्न करना जीरो. नहीं तो तुम एक वेक्टर बनाना डीपी के नाम से, सारे सबको तुम इनिशियलाइज करना -1 से, साइज होना चाहिए तुम्हारा अगेन इसके बराबर ही रख, n+2 के बराबर. ठीक, वो करना. और रिकर्सिवली यू कॉल दैट फंक्शन, यू राइट रिटर्न सॉल्वर या जो भी, यू सेंड कॉस्ट, यू सेंड दिस डीपी. ठीक है, अभी सॉल्वर में क्या करोगे, बेस कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करो. यहाँ पे चेक कि इफ डीपी इज ऑलरेडी -1, इफ नॉट यू रिटर्न दैट पर्टिकुलर वैल्यू और फिर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट करो. ठीक है, बट इस बार ये मिनिमम डीपी के जगह तुम ऑफकोर्स यहाँ पे फंक्शन नेम दे रहे होगे. ठीक है, एंड कॉस्ट इज सिंस यू हैव ऑलरेडी you already have this cost as vector, you will write this particular thing and you will return dp of n+1. ठीक है, that is exactly what memoization tells us to do. Okay, is there time left? इसका एक और अप्रोच देखते हैं. there is one approach to it. मतलब कि ऐसे जो भी स्टेयर्स है हमारा, दिस इज nth stair, दिस इज 0th stair, हम लोग क्या कर सकते हैं in order to reach n+1th stair, we know one thing for sure, either you can jump from here or you can jump from here. ठीक है, इसको हम लोग वापस पीछे से ट्रैवर्स कर रहे हैं. इसमें ऐसा इसमें थोड़ा सोचने वाला है, बट तुम सोचो कि अगर हम लोग लास्ट के 2 स्टेप पर रहेंगे तभी वहां से जंप करके यू विल बी एबल टू रीच द टॉप. ठीक है, इसके कॉस्ट को पे करोगे, इसके कॉस्ट को पे करोगे, इन दोनों में से कुछ भी, एंड यू विल रीच टू द टॉप. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजिशन एंड वी स्टोर minimum of cost at, if this position is I, so I+1 comma cost at I+2. ठीक है, इसको मान लो एक पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करो, लेट्स से आंसर. मतलब कि अगर तुम यहाँ से यहाँ पे जितना जितना भी ये लगेगा पैसा, तुम यहाँ जंप करने के लिए इन दोनों में से जो मिनिमम रहेगा उसमें तुम जाना चाहोगे, वहां से जंप करोगे. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर हियर, you what you do is you will keep on adding यहाँ पे आने तक का पैसा प्लस यहाँ ये दोनों, मतलब what I am trying to say is first you treat this as final step. ठीक है, then you treat this as final step. In order to reach here, ये दोनों क्रॉस रहेगा और तुम यहाँ पे स्टैंड करोगे आई वाला पोजीशन पे. समझ रहे हो, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम समझ रहे हो कहाँ पे कॉज हो रहा है. नेक्स्ट यू थिंक कि ये हमारा फाइनल स्टेप है, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए ये दोनों क्रॉस रहेगा एंड यू विल बी स्टैंडिंग हियर. ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के लिए सिमिलरली ये दोनों क्रॉस रहेगा एंड यू विल बी स्टैंडिंग हियर एंड सो ऑन. सो इफ यू स्टार्ट एक फॉर लूप में से, कहाँ से, n माइनस ये वाला पोजीशन क्या है, nth वाला क्या है, n nums dot size -1, this is nums dot size -2, this is nums dot size -3. ठीक है, so you start from nums नहीं cost dot size -3 से, और ये वाला चीज को यहाँ पे लिखो आंसर. आंसर में तुम वो ऐड करते जा रहे हो जो भी मिनिमम लगेगा आगे के स्टेप्स के लिए. समझ रहे हो, एंड इफ यू कैन थिंक कि हम लोग मैक्स
सबसे ऊपर वाले स्टेप के लिए मिनिमम चूज कर रहा है, देन वी से कि ठीक है ऊपर वाले का हो गया, अब इसके लिए तुम मिनिमम चूज करो, फिर इसके लिए चूज करो, इसके लिए चूज करो। तो इन ऑर्डर व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द मिनिमम फॉर होल सबसेट। ठीक है, सबसेट नहीं, सेट रादर। सो ये वाला थिंग, सबसे पहला की यू स्टार्ट फ्रॉम फॉर इंट I is equals to cost dot size minus 3. I is greater than equals to 0. इसको आंसर में अपडेट नहीं, कॉस्ट ऑफ आई में अपडेट करना होगा। कॉस्ट एट आई इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ आई प्लस वन, कॉस्ट ऑफ आई प्लस टू। एंड सिमिलरली फिर इस पर्टिकुलर आई के लिए मिनिमम ऑफ दीज फोर। ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच दिस आई हैव टू चेक कि हम लोग कौन सा मिनिमम पोजीशन पे स्टैंड करें कि हमें सबसे कम पैसा लगे। दिस माइट सीम कंफ्यूजिंग, एक बार खुद से सोच के देखा। मिनिमम ऑफ कॉस्ट ऑफ आई minus plus 2 here, और रिटर्न क्या करोगे, तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे, तब तो तुमको पता चलेगा ना मिनिमम कितना लग रहा था। तो विल बी रिटर्निंग कॉस्ट ऑफ जीरो, राइट। अभी हमारे क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया बोला गया है कि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। तो मतलब ये दोनों तुम्हारे, ये दोनों स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो इज इट ओनली कॉस्ट ऑफ जीरो और कॉस्ट ऑफ वन पे भी तुम स्टार्ट कर सकते हो ना। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा तुम वहां स्टार्ट करना चाहोगे। अगर कॉस्ट ऑफ जीरो से स्टार्ट किया मतलब तुम कॉस्ट ऑफ जीरो के बाद टू स्टेप्स ले लिए, और कॉस्ट ऑफ वन से स्टार्ट किया तो कॉस्ट ऑफ वन के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन है इधर वन स्टेप और टू स्टेप। ऑफ कोर्स यू वोंट वांट कि तुम कॉस्ट ऑफ जीरो से स्टार्ट करो और फिर वन पे भी चले जाओ और वन पे भी ऐड हो जाओ, तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ना तुम्हारा। Wait, there is some problem. क्या हो रहा है, expected 6 output 1 plus equal। ओके, सो ये वाला अप्रोच बस हमारा वो फैक्टर से मैच नहीं किया कि first you get to the sub problems and make a recursive solution, although that is it takes the same amount of time। इसमें भी तुमको ऑर्डर ऑफ एन ही लग रहा है, इसमें हमारा स्पेस बच रहा है। ठीक है, and hence we are using this particular solution। तो आज के लिए इतना ही, we are on time, it's 8:59 already। See you in the next session, till then, okay। uh maybe or maybe not, dynamic programming will be the last topic that we'll be discussing in this GDG goated DSA grind, okay, because we have 2 lectures left in order to complete our 25 lecture series. Let's see how, if we are continuing, then how we'll do that, we'll see, okay। So I hope things are clear, these 3 steps are clear on how to make tabulation, how to do memoization, how to make uh, work with variables, okay। ठीक है फिर, keep grinding, till then, see ya, bye bye, शुभ रात्रि।